Good morning, students. This is your teacher Neela Mehlavat, and today we'll be completing a chapter. We are left with only the last topic, that is power of lens. So we'll start with this topic, and we'll solve some numericals also, right? So you keep your books, notebooks ready so that we can start. Shall we? Okay. Now basically power of lens means the reciprocal of its focal length. अगर हमारे पास कोई भी लेंस है, उस लेंस की जो फोकल लेंथ है, अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं, सो दैट विल बी द पावर ऑफ लेंस. और ये पावर जो है हमेशा मीटर्स में होती है, मतलब जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे दैट शुड बी मीटर्स. इट कुड बी 25 मीटर्स, 15 मीटर्स लाइक. सो योर पावर हैज टू बी इन मीटर्स, राइट. ना हम रिवर्स भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास पावर है तो हम फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, सो रिवर्स भी हो सकता है. अगर हमारे पास फोकल लेंथ है तो हम पावर भी निकाल सकते हैं, राइट. Now SI unit of power is diopter. What is the SI unit of power? It is diopter. Like अगर हम कह रहे हैं, let's suppose if we are saying, suppose करिए the focal length is 25 centimeter, 25 meter. Okay. So we'll use the formula P is equal to 1 upon F. So we'll keep 1 upon 25, right? We'll keep 1 upon 25 and we'll calculate. So that will be the power. Okay. And whatever the value will be, whatever value it could be, we'll write diopter. Diopter is a unit. Like for distances, we always have, like here I have written 25 meters. So meter is a unit of distance. So same way, the power has a unit of diopter. Okay. Now question comes, if sometimes if your focal length is given in centimeters. Let's suppose if I say that the power is the focal length is 25 centimeter. So then in that case, first we will convert it into meters. Okay. अगर फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में गिवन है तो आप उसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे. लाइक इफ f इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, राइट. सो यू विल डिवाइड इट 25 बाय 100. Why we dividing it by 100? Because 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay. So we'll divide it with 25. It will be 1 by 4 meters. Right. This is first way. The second could be, the second way is, सेकेंड तरीका क्या है, सेकेंड वे क्या है कि हम इस अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 100 अपॉन F, and if this focal length is centimeters. Okay. So rather than converting there, we'll use this formula. तो अब हमारे पास पावर के दो फॉर्मूले हैं. अगर हमारी पावर मीटर्स में है, सो वी विल यूज P इज इक्वल टू 1 अपॉन F, एंड इफ द पावर इज इन सेंटीमीटर वी विल यूज 100 अपॉन F, दैट इज इन सेंटीमीटर्स. ओके. एंड इन बोथ द केसेस द यूनिट विल बी डायोप्टर. ठीक है. अब अगर हम कहते हैं कि पावर की वैल्यू डायोप्टर है, सो हाउ, व्हाट इज 1 डायोप्टर? What is 1 diopter? How can we define what is 1 diopter? हाँ जी, what is 1 diopter? देखिए F is equal to 1 upon P, और you can say P is equal to 1 upon F. So अगर हमारी focal length 1 meter है, if the focal length is 1, that means 1 meter, so हमारी power भी 1 diopter होगी. So 1 diopter means when the focal length is 1 meter, it is the power of the lens when the focal length is 1 meter. Okay. It is the power of the lens when the focal length is 1 meter. Clear students? Now coming to the convex lens. अगर हम convex lens use करते हैं तो उसकी power positive होगी. Why it will be positive? क्योंकि convex lens की focal length भी positive होती है. Okay dear students? So if we are using convex lens, the power of convex lens will be positive.
And if you are using concave lens, the power of concave lens is negative. Okay, the power of concave lens is negative. Now suppose we were using only one lens. Suppose we are using two lenses. Then suppose you have a lens 1 and lens 2. अब हम दो लेंस यूज कर रहे हैं, सो उस केस में पावर का क्या होगा या फोकल लेंथ का क्या होगा, राइट? सपोज करिए, सो हमारे L1 जो फर्स्ट लेंस है उसकी फोकल लेंथ है f1, जो सेकेंड लेंस है उसकी फोकल लेंथ है f2, and we want to calculate the combination focal length of the combination, right? The focal length of the combination, right? So in this case 1 upon f, this f will be your total, so you can write t here. So f1 upon f3 will be equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2, right? Clear, students? So it is not power, it is the focal length of combination. It is the focal length of combination, right? So अगर हमारे पास दो लेंस हैं तो हम इस तरीके से टोटल फोकल लेंथ निकालेंगे. सेकेंड कम्स योर पावर. अगेन सपोज करिए हमारे पास दो लेंस हैं L1 and L2. L1 has a power of P1 and L2 has a power of P2. So what will be the total power? The total power will be equal to P1 plus P2, right? अगर हमने दो लेंस यूज किए हैं तो हम टोटल पावर निकाल सकते हैं दोनों लेंस की P1 plus P2 करके, right? But always remember, the power will always write with sign convention, whether it is plus or minus, right? We'll always use it. The plus minus should always be there. So total power will be equal to P1 plus P2. Now let's solve a numerical. Suppose करिए हमारे पास लेंस है, एक लेंस की पावर है 12 diopter and second lens has a power of 8 diopter. Now what is the focal length of the combination? अब हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है कॉम्बिनेशन की, राइट? हमारे पास दो लेंसेज हैं, लेट्स सपोज L1 L2. L2 की फर्स्ट जो है फर्स्ट की पावर है +12, सेकेंड की पावर है -8. ओके, सो टोटल पावर निकालेंगे हम. टोटल पावर कितनी हो गई? सो टोटल पावर विल बी इक्वल टू 12 minus 8 बिकॉज इट इज माइनस, राइट? बिकॉज फॉर्मूला जो हमारा टोटल पावर का है वो है P1 plus P2. सो यू विल हैव 12 minus 8, right? You will have 12 minus 8. So the answer is 4 diopter. So हमारी टोटल पावर कितनी हो गई? 4 diopter, right? What is the total power? 4 diopter. Okay. Now we have to calculate the focal length. हमें निकालना क्या है? हमें focal length निकालनी है, हमें total focal length निकालनी है. So f will be equal to 1 by P. Sorry, f is equal to 1 by P. P की वैल्यू कितनी है हमारी? P की वैल्यू कितनी है? +4. P की वैल्यू कितनी है? +4, right? So we will have 1 upon 4. Okay, f will be equal to 1 upon 4 and the answer will be 0.25 meters. Okay, dear students? Now let's try another question. Now suppose एक convex lens है, उसकी focal length 20 सेंटीमीटर है. लेंस कौन सा है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस. कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? प्लस. सो f इज इक्वल टू +20. f इज इक्वल टू +20 एंड इट इज सेंटीमीटर. ओके, f इज सेंटीमीटर्स, राइट? ओके, डियर स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स. ठीक है? So your P will be equal to 100 upon F. You remember I told you 100. Why we are using 100? Because हमारी जो focal length है वो सेंटीमीटर में है. So हम P is equal to 100 upon F यूज करेंगे. That is equal to 100 upon 20. 100 upon 20 which is equal to 5. So 5 diopter. Okay, dear students? I hope you understood the numericals in the terminology. Right.
So I am giving you a few questions for your practice. So these are the questions you need to practice. Such questions are very, very common in the board exam. Okay, you can choose out of the multiple options, and first you got to solve it, then you will pick the correct answer, right? I've given you 6 questions here. 7 questions. Okay, that will be your homework. Okay, dear students? See, these are the 3 questions, 1, 2, 3, and then we'll have these 4 questions. So total 7 questions for your homework today. Okay, everyone? Well done. And along with this, you will first prepare the notes of this topic. Secondly, you'll complete these 7 questions, and third, you will read this topic from your book. Okay? Tomorrow we'll discuss the NCERT questions, right? Well done. Okay. Bye everyone.